So in the previous topic, we discussed about the practical investigation to check the effect of temperature. Now we're going to carry out a practical investigation to check the effect of pH. Now, starting with place single drops of iodine solution in rows on the tile, label a test tube with the pH to be tested and use the syringe to place 2 centimeter cube of mileage in the test tube. अब आप क्या करेंगे? Again, place single drops of iodine solution in rows on the tile, label the test tube with the pH to be tested. कोई आप pH 2 के ले लें, pH 4, pH 6, pH 8, ताकि हम कंपेयर कर सकें that at which pH does the amylase work the best. Then use the syringe to place 2 centimeter cube of amylase in the test tube. Add 1 centimeter cube of buffer solution to the test tube using a syringe, and then use another test tube to add 2 centimeter cube of starch solution to the amylase and buffer solution. Then start the stopwatch whilst mixing with a pivot. After 10 seconds, use the pipette to place 1 drop of mixture on the first drop of iron. अब हम buffer solution का use कर रहे हैं. Temperature में तो हम क्या करते हैं? Heat दे रहे हैं, क्योंकि heat देंगे temperature increase होगा. यहाँ पे pH change करने के लिए हम एक buffer solution को बीच में ला रहे हैं. So after 10 seconds, use the pipette to place 1 drop of mixture on the first drop of iodine, which should turn blue-black. Wait another 10 seconds and place another drop of mixture on the second drop of iodine. Repeat every 10 seconds until iodine solution remains orange-brown, and then repeat experiment at different values. The less time the iodine, अब ये जो है ना, this is a valid reason. ये आपका conclusion होता है. The less time the iodine solution takes to remain orange-brown, the quicker all the starch has been digested, and so the better the enzyme works at the pH. An amazing conclusion that you can give at the end of the experiment. What do? You first tell the apparatus. Whenever the examiner asks you, आप पहले apparatus बताते हो, फिर method बताते हो, फिर results, precautions, conclusion, data collection. ये सारा जब आपको compile होगा, then you will be telling कि आपने कैसे करना है. अभी हम इसके बाद क्या करेंगे? आफ्टर द क्लास मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा 6 मार्क्स का, नीचे मैं कुछ पॉइंट्स दूंगा. अंडर दोज हेडिंग्स आपने क्या करना है? यू टेक अ पेपर, ठीक है, आपने हेडिंग डालनी है apparatus की, देन लिस्ट डाउन ऑल द apparatus जो भी आपको लग रहा है. व्हाट कैन यू थिंक ऑफ? ठीक है, यू कैन थिंक ऑफ द apparatus, अ बंसन बर्नर, अ बीकर, पिपेट, amylase solution, starch solution. ये आपको क्या हो गया? apparatus. मेथड क्या होगा? जो हमने पीछे पढ़ा है वो टेम्परेचर. हाउ आर यू गोइंग टू check the effect of temperature up and spotting tile. Yes, spotting tile is also a piece of apparatus. Apparatus ही है ना spotting tile. तो आप पूरा method बताएंगे that first tile add a lot of drops of this iodine solution on a spotting tile. फिर आप starch solution को heat करेंगे, 3 किस्म के temperatures लेंगे, फिर observe करेंगे. Results आप बताएंगे कि जी 20 पे इतना था, 40 पे इतना, 60 पे इतना. Conclusion बताएं, ठीक है. Data कैसे collect करेंगे वो बताएं. You can plot a graph, you can draw a table. आप कहाँ पे नोट करेंगे, कैसे नोट करेंगे? यू वुड यूज अ स्टॉप वॉच. ये सब चीजें आपने उस एक्सपेरिमेंट बतानी. इट शुड बी अराउंड मैं कहता हूँ 10 to 12 लाइंस की एक्सप्लेनेशन हो प्रॉपर. ठीक है, आपने वीडियो भी देखी. यू कैन जस्ट ओपन अप योर माइंड एंड थिंक दैट यू इनसाइड अ लेबोरेटरी, एंड देन यू विल बी टीचिंग यू अ थिंग नोन एज अ कॉम्स इवैल्यूएशन. कॉम्स इवैल्यूएशन में भी हम आगे वाले चैप्टर्स में जाएंगे, तो हम थोड़ा सा ना प्रोफेशनली इस चीज को डील करेंगे. कॉम्स इवैल्यूएशन क्या चीज होती है, दैट यू विल बी यूजिंग इन योर papers. So a quick recap to the practical of effect of pH. Iodine added to the spotting tile, then 1 centimeter cube of pH 7 buffer solution. This is the one. Buffer solution क्या होता है? आपका pH जो आपने वेरी करना है, आप pH वेरी कर सकते हैं. एल्कली ज्यादा करते हैं इसमें, कभी एसिड ज्यादा करते हैं, और फिर क्या करेंगे? add amylase plus the buffer to a test tube, mix it, then add starch solution and start the stopwatch. Then start the timer. फिर आप क्या करेंगे? After 10 seconds, add a drop of solution to the iodine in spotting tile. वही देखेंगे. Obviously, जितना जल्दी blue black color disappear होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा, the better the amylase is working. So pH 7 is equal to 60 seconds for the reaction to complete. Repeat every 10 seconds until iodine doesn't change color. Repeat steps 1 to 5 using buffer solutions of different pH. pH 5 पे you can see, ये देखिए, ये 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds, 40 seconds. At the 80th, मतलब ये आपके पास 80th है ना, 80th second पे starch has disappeared. मतलब all the starch has been successfully broken down by amylase at pH, कौन सा? pH 5 पे successfully breakdown हो चुका है. यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि at 90 seconds pH 9 के ऊपर भी reaction complete हो चुका है. pH 14 पे starch is still present. Starch is
still present. हर स्पॉट के ऊपर आप देख रहे हैं स्टार्च इज स्टिल प्रेजेंट टिल द एंड. इसका क्या मतलब है? दैट इट हैज नॉट बीन ब्रोकन डाउन. व्हाई हैज इट नॉट बीन ब्रोकन डाउन? क्योंकि आपका जो एमाइलेज एंजाइम था, एमाइलेज एंजाइम वाज रिस्पांसिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन स्टार्च. द एमाइलेज एंजाइम itself got denatured, hence no reaction. And this is the end of your chapter of biological molecules.